इस एक महीने के चर्चा सत्र एक कोर्स में जो भी साथी जुड़े हैं, मैं प्रोफेसर सुंदर सरुकाई के तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। Let me wish all of you a happy Diwali season. Despite the fact that we're surrounded by so many problems which make it very difficult for us to stay happy, yet one must hope till hope creates the thing it contemplates, as a poet said. हम सब इस सोच में है कि आदिवासी की शिक्षा कैसे हो, उससे जुड़े बहुत सारे सवाल हमें परेशान कर रहे हैं, चिंता का विषय बने हैं, and we yet not found any good stabilized solution for those issues. I have myself struggled for the last 4 decades or longer, as has my co-panelist today, Dr. Vasvi, and many of you with these problems. And what I have gained is not a clarity on the solution, but some clarity on the nature of the problem. इसलिए मैं आपके सामने ये समस्या क्या है वो रखने की कोशिश करूंगा। बेयरफुट फिलोसोफर्स और भाषा, ये दोनों का उद्देश्य एक ही है, और वो है कि चिंतन से चर्चा तक, चर्चा से हमारी चाल चलन तक पहुंचे, फ्रॉम थियरी टू प्रैक्टिस, डिस्कोर्स, फ्रॉम डिस्कोर्स टू डेवलपमेंट, and there are many stages involved in that very long journey, which I tried to put ridiculously in 2 or 3 small words. But we thought that we should come together and have such a discussion. Bhasha Center was established in 1996. It then created an Adivasi Academy as the voice of Adivasis, not voice for Adivasis, voice of Adivasis. और इस आदिवासी एकेडमी के नियोजन के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल है, और उसकी बौद्धिक परिसीमाएं बढ़े, टू एक्सपांड द होराइजन्स, इंटेलेक्चुअल होराइजन्स, आइडिएशन रेंज, we invited an academic council, and it is as part of the academic council's activity that Professor Sundar Sarukai suggested that the first thing we must do is to start thinking collectively on the question of education for by whom, including, I mean, keeping Adivasis at the center. लेकिन ये सवाल केवल आदिवासियों के लिए नहीं, घुमंतों के लिए, नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए भी है, और जो हाशिए पे है, ऑल दी कम्युनिटीज ऑन मार्जिन, उनके लिए भी ये सवाल बहुत बड़ा सवाल बना है। द 21st century opened up as the century of knowledge. लेकिन हम देख रहे हैं कि other than developing along the road of knowledge, the century has started moving in the direction of autocratic regimes, and that is the context within which we are meeting. To begin with, let me say that the question as to who is Adivasi has been very problem-ridden question in South Asia.
It is not so when we think of Canada or United States, New Zealand or Australia. It is perhaps even more complicated when we think of countries like Kenya and Nigeria or Central African countries. Every part of the earth has a different complexity when it comes to the question of who are the Adivasis. मैंने indigenous शब्द का इस्तेमाल सोच समझ के इस समय नहीं किया है. I will bring that word in a little while. तो कौन है आदिवासी? Who are the Adivasis? Very many times, I mean, I'm not thinking of what anthropologists have said about who the Adivasis. But for anthropology, for a very long time, Adivasis were the subject matter of their study. In fact, whoever was studied by anthropology could be described as Adivasi at one infamous stage of anthropology journey. Anthropology has come a long way since then, and has modified its ways and approaches, and that's a different story. ये सवाल मैं आदिवासी के नजर से सोच रहा हूँ. So many times Adivasis have claimed, answering that question, कि आदिवासी कौन है? Who are Adivasis? Very many times Adivasis have claimed that they have been here since the beginning of the cosmos, beginning of the earth, beginning of the Homo sapien. I mean, metaphorically, when they say beginning of the cosmos, is not a statement in astrophysics. It is a statement, it is a metaphor to say that from times immemorial, we have been here. In simpler words, they claim a prehistoric existence in South Asia. And indeed, there are groups of tribals. There are tribes, such as in the Andamans, or such as in Buldhana district in Maharashtra, where there's a community called Nihali, or in some parts of Orissa. There are prehistoric communities that have remained, that developed there in prehistoric times. That is roughly the time when agriculture started received in various parts of India, roughly 7,000 years before our time. उसके पहले भी hunter gatherers थे, या तो pastoral nomads थे. Some of them have settled where they are, and much earlier, even prior to Holocene, there have been migrations from Africa to this part of the world, and some communities have stayed on, as in the case of some of the communities in the Andaman Islands. तो एक तो है कि ये prehistoric है, but are all Adivasis prehistoric? That answer is no. Not all Adivasis, not all scheduled tribes in India are prehistoric communities with a continuity. The second description that I heard from Adivasis is quite eye-catching, mind-capturing. मेरे एक आदिवासी दोस्त ने पूछा था कि सर, आप बताइए, इस देश में दो ही लोग होते हैं, एक तो जाति वाले, कास्ट, और दूसरे ट्राइब. कोई भी व्यक्ति आइदर इज ए कास्ट और ए ट्राइब. तो जब कास्ट बनी, तब जिनका एक्सक्लूजन हुआ वो ट्राइब बने होंगे, या तो सभी ट्राइब्स थे लेकिन जिनका एक्सक्लूजन हुआ वो कास्ट हुए होंगे. Now, this friend's question was very intelligent question, though his historiography was not exactly what academic historiography would be. However, I have no hesitation in saying that during the era stretching from about 2000 years before Christ till about the beginning of the Christian era, those 2000 years, when Varna was getting created and getting received in the South Asia, the people managed to remain not
नॉट ऑफ देयर वोल्यूशन, उनकी इच्छा से नहीं, लेकिन कोई ऐतिहासिक वजह से कि इस वर्ण फोल्ड के बाहर रहे, ऐसे आदिवासी है। And these communities have continued. For instance, ये दिवाली के समय महाराष्ट्र में कुछ लोग हैं, वो बलि की पूजा करते हैं, and for them neither महाभारत nor रामायण mean anything at all, and they wish के वो मराठी में बोलते हैं ईड़ा पीड़ा तोड़ो बलि से राज्य, let all calamities go, let the era of Bali come back. These are actually communities that did not assimilate in the caste fold. So this is another story that Adivasis themselves present as to who they are. That is in proto-historic times. One is prehistoric origin, second is proto-historic, where the history was not clear, but it was getting clearer by the century for over those 2000 years. There is a third very interesting story and is extremely convincing. The moment you, जैसे ही आप ये किसी को बताएंगे तो वो बिल्कुल बिनतोड़ उसका प्रत्युत्तर हो ही नहीं सकता, इस तरह की थ्योरी। और वो ये है कि यूरोप में आदिवासी, why doesn't Europe have a prolific a density of tribal communities? And why tribal communities are there only in Australia as a continent, Africa as a continent, Asia as a continent, and South and North America as a continent? The answer is, when the European powers colonized the rest of the world, the native people there came to be branded as the indigenous, and historically accurate in the case of the Americas and Australia, but not historically accurate in the case of Africa and Asia for various reasons, but I'll not get into that. तो हम उन कोलंबस के पहले, कोलंबस आने हर जगह जो कोलंबसेस गए, वो वास्को द गामा गए, वो पहुंचने के पहले के जो लोग थे वो इंडिजिनस बने. That's why we have difficulty in using the term indigenous in our context. और जो यूरोपियन थे वो सभ्य सोसाइटी बनी. Europeans were seen as developed and the rest were seen as non-developed, underdeveloped, primitives, and therefore tribals. So colonial history has also created lots of communities as tribes. इंडिया में, भारत में कॉलोनियलिज्म का और आदिवासियों का संबंध उस तरह का नहीं जो अमेरिका और कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में है, बट देयर इज अ डिफरेंट रिलेशनशिप. एंड वेरी ब्रीफली, फॉर वांट ऑफ फॉर पॉसिटी ऑफ टाइम, आई विल बी वेरी ब्रीफ हियर टू से 1820s तक, जब the last battle between the Peshwas and the British was fought, in which the Peshwas lost, and the British supremacy over most of India was established, from Afghanistan to what was Burma to Ceylon, where British had captured. They had struck agreements, they had signed contracts with native princes. उन कॉन्ट्रैक्ट का जैसे सिराजुद्दीन के साथ हुआ बंगाल में 1757 में, कि the military control will be by the company, but some of the civil things can be run by the local prince. इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे. Obviously, the British had an indirect control over all the land which was under the control of the princes previously. लेकिन ऐसे कुछ जगह थी जहां राजा ही नहीं थे. फॉर इंस्टेंस, या तो जो राजा थे वो कोई स्पेक्टेकुलर राजा, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशनलाइज राजा नहीं थे, कम्युनिटी चिफ्टेन्स होते थे. जैसे घुमंतुओं की कम्युनिटीज है, और वो जहां बसते हो गए कहीं कहीं उनके कैंप साइट्स, there was no queens, or many areas where signing a treaty and thereby bringing the land under the control of the company, East India Company, had not become possible.
ये सभी जमीन में रहने वाले लोगों की लिस्ट बनाई गई ड्यूरिंग द 1830s, between 1830s to 1850s, जिसके लिए certain commissions were appointed. In the case of nomadic tribes, the result was वो सब communities, nomadic communities को 1871 में अंग्रेजों ने criminal tribes के रूप में declare किया. But in the case of non-nomadic but landed जो communities थी, in their case, the British brought in a law which was called the Forest Law, Forest Act, and under the and by virtue of the under the powers of the Forest Act, all the land that was not controlled by princes, any of the Indian princes, but by communities themselves, was brought under the sovereign domain. The control, sovereign domain was the control of the Queen or the King of Britain. And that's why we have this Forest Act of 1864, 1864 from Burma, they brought about 1,500 trained foresters, planters, plantation wale. 1866, the Forest Act turned this land into land owned by forest department, controlled by forest department. और इसीलिए आज भी forest शब्द का जो अर्थ है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, it means land, I'm saying LAND, land, जमीन, पेड़ नहीं, वृक्ष नहीं. forest का मतलब है जमीन controlled by the forest department. If you open the Oxford Dictionary, you will find that the first meaning is a bunch of trees, a group of trees. Second meaning is any land owned by forest department is called forest. वहां रहने वाले लोग, उनको अंग्रेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्राइब्स नाम दिया. So this is the third type of tribal community. One is prehistoric, second is protohistoric, third is colonial times. The fourth type of tribal communities in India can be seen in areas like areas which could not get benefits of some of the schedules of the constitution. जैसे northeast में there is the land ownership by the community council. वो act that schedule could be provided. But in the case of areas which are now under Uttarakhand and Himachal Pradesh, the similar provision was not made at the time of formulation of the constitution. इसलिए वहाँ के कुछ districts में post independence, post constitution, but through an administrative directive, certain districts were declared as entirely tribal. I will give you a couple of examples. Say Lahul Spiti district है, बहुत बड़ा है हिमाचल प्रदेश में. वहाँ जो भी पैदा होता है, he or she becomes automatically tribal. और इसलिए वहाँ के राजा भी ट्राइबल गिने गए. Who was a regular prince, not a tribal prince previously. Similarly, with Kinnor district that has happened. In Uttarakhand, there are areas where anybody residing in that area is automatically tribal. Ab, in the year 2024, when one is looking at the landscape of tribal landscape of India, by landscape I don't mean land. I'm using landscape as a metaphor. Picture, the map. By map I don't mean geographical map. The range, let me say. When we look at who are Adivasis, Adivasi kaun hai? So there are different types of Adivasis in the country. And therefore, any overarching definition of tribe in the country is possible only if somebody attempts a negative definition. और वो जो मेरे दोस्त ने कहा था, आदिवासी दोस्त ने, कि सर जो जाति नहीं है वो ट्राइब्स है. But that definition gives clarity to who the castes are
rather than who the tribes are. And within that difficult terrain of not having a possible single definition of tribals, we have to think of tribal education. दूसरी बात है जो गवर्नमेंट ने लोकुर कमिटी formulation, who are tribals? Adivasi and Ekon. This was soon after independence. This was soon after in the Constituent Assembly debate where Jaipal Singh had asked Jawaharlal Nehru, if you want us to merge with this country, it can only be if there is a level playing field. If अगर समानता होगी तो ही हम इस देश को साथ जुड़ सकते हैं. And a promise was given. उसके soon after that एक definition बनाया गया. It was such a fragile, such a tentative definition कि कभी-कभी वो जब मैं पढ़ता हूँ या उसके बारे में सोचता हूँ तो पता नहीं चलता कि हंसे या रोए. The definition of tribes, official definition in India of who is a tribal, तो सबसे पहले है they live in remote areas. Now, if you are an Indian in Trivandrum, and if you think of a remote area, then Jaipur, Chandigarh, Delhi look very remote, but not everybody in that area can be considered a tribal. So remote is a very relative term and therefore non-operative term. The second qualification is they are shy. मुझे एक एड आती थी टीवी पे, उसमें छोटी बहन बड़ी बहन के बारे में कहती है, हाँ हाँ मेरी बहन तो हर बार शाई होती है. I mean, इसे सच्चे who is a shy is perhaps they are reluctant to talk to us would be a better description because we have offended them so often. They would be reluctant talking to us. But their being shy is no definition at all. The third part is that they have their own culture, religion, etc., which is a relatively steadier because you can at least think of what it is. Though culture is as elusive as anything else in the world. Finally, the last thing is they have their own languages, which is a substantive, verifiable definition of tribes. But if we were to apply that description to any community in India would be having its own language. हर एक की भाषा होगी, हर एक की भाषा होगी. तो ये सरकारी जो डिस्क्रिप्शन है ट्राइब्स का, उसे ट्राइब्स का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होता है. What is shown as description is a non-description. It is a pointless description. वो सरकारी कागजात में है, इसलिए हम उसको सलाम करते हैं, इतना ही है बस. But otherwise, आप देखिए recently Supreme Court came up with an observation that DNTs face great caste discrimination in prisons. तो प्रिजन में डीनोटिफाइड ट्राइब्स की बात थी. तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के शिकार बनते हैं, वो सच है. तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एक झटके में जो आज तक डीनोटिफाइड ट्राइब्स थे वो सुप्रीम कोर्ट की जुबान में पैरालांस में डिस्कोर्स में कास्ट बन गए because of lack of proper definitions. Now, in this situation, we have to look at how tribals themselves define themselves. Knowledge for tribals, knowledge of tribals can be understood if we accept how tribals define themselves. और उनके जो claims है, वो है कि वो इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. when they are walking on a road, कोई डाली आ जाए, कोई branch comes in their way, they gently push it away, they don't chop it. ये एक बहुत I mean simple example I am giving, and this can be universally. They are ecologically responsible. उन्होंने resources उद्ध्वस्त नहीं किए. They have not hurt the earth to the extent others have hurt the earth.
ये बात है। दूसरा है कि उनकी इकोनॉमी में वो इगैलिटेरियन होते हैं। मैंने कुछ डीएनटी के चोरी करने वाले समाज के साथ काम किया तो देखा कि वो दे डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग इक्वली। आई एम नॉट प्रेजिंग थेफ्ट, बट आई एम प्रेजिंग ability to accept equality as other people's rights, not my right only. आदिवासियों में कोई मकान गिरता है तो दूसरे की मदद करना, खेती में काम नहीं करने, all of you know that, I don't have to get into it. Things have changed quite a lot over the last some decades, ये भी बात सच है, and yet in Adivasi villages we still see this ability to accept economic equality as a guiding principle for their social life. The third is ecologically responsible, economically egalitarian, and in terms of their social formations, one sees that patriarchy, of course, there are headhunting tribes. Marriage outside is seen as great sin, but within their own communities, patriarchy is less prevalent. In many communities, they are actually in the north is matriarchal, but women are given a dignity and respect, at least to some extent, respect and dignity that they deserve. ये मैंने देखा है, और जेंडर उनकी औरतें काफी कॉन्फिडेंस से दूसरे के साथ बात कर सकती है, जो कास्ट में नहीं दिखा जाता. So socially, I mean, non-patriarchal, gender equalities of higher degree, और आप purely numerical data terms, जो gender balance है, male-female ratio in population in India, it is the best among tribal communities and worst among caste communities that you all know. So it is that kind of society that with which we're dealing in the context of lack of definition, and in the context which is lack of definition. ये तो एक context है, लेकिन दूसरा ज़्यादा भयावह जो डराने वाला context है, वो है कि एजुकेशन में, हमारे देश के एजुकेशन में इनइक्वालिटी ये नॉर्म बना है, एक्सेप्शन नहीं है. The state's neglect of the needs of people has crossed all limits of shame and conscience. बिल्कुल कुछ किसी भी डर के बगैर लोगों की अनदेखी करके एजुकेशन का काम आज शुरू है, क्योंकि एजुकेशन को हमारे समय जैसे हमारे थोड़े पहले हेल्थ वाज टर्न इनटू एन इंडस्ट्री एंड अ मार्केट. पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होती थी अच्छी सी, then health became an industry and a market. Education is a marketplace today. और उस marketplace में जिसको जो जितना ऊंचा कूद सकता था उसको आजादी है, और दूसरे को तोड़ने की, मोड़ने की उसे आजादी है. इस ढंग की पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स है. Despite all the decorative terminologies of the governments, state governments and the central governments, the fact is that, and this gets reflected कुछ in data, कुछ साल पहले, कुछ शायद 10 या 12 साल पहले, when Sukhdev Thorat was chairman of the UGC, he prepared the first report on how tribes and scheduled castes are represented in higher education. And if one were to read that report, the only outcome would be a tremendous anger
कि ऐसे हो ही कैसे सकता है, while we are given guaranteed equality by the constitution, यूजीसी में बिल्कुल जगह ही ना हो हायर एजुकेशन में ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, कैसे हो सकता है? We know the reasons. We know about dropout of girls in high school education. उसके बारे में अमर्त्य सेन ने लिखा था the missing girls, जिसको उस रिसर्च को नोबेल प्राइज मिला। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बारे में वो रिसर्च है कि हाउ हाई स्कूल गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ हाई स्कूल। अब ये दिस इज more frightening of a problem, lack of definition, but the context is damaging for tribals and their education. ये बात है। The third front where we have great issues, बहुत ही challenging issues है, और वो third front ये है कि knowledge और education, इसमें पिछले कई सदियों से हमारे देश में बहुत मिक्सअप है, कंफ्यूजन है। You see, when Rajaram Mohan Rai was asking for English education in Bengal, he was not asking primarily for bringing English language into Bengal. He was looking at social reforms in Bengal. उनका कहना था कि कुछ समाज में बदलाव लाने के लिए नए प्रकार का एजुकेशन या नॉलेज आए तो बदलाव आ सकते हैं। There was an organic consistency between the social changes he wanted and the kind of education. We have to look at education and knowledge as a continuity of our social needs and pressures. उसमें organic link होनी चाहिए, जिससे where knowledge and education become driving engines for social change. आदिवासियों के बारे में सोचते समय हमें सोचने की जरूरत है कि क्या जिस ढंग का यूनिवर्सिटी एजुकेशन हम आज लोग युवा को दे रहे, वो आदिवासियों को मिलने से their egalitarian economic attitude and non-patriarchal social attitude and ecologically responsible attitude will remain alive or get destroyed. One size fits all education आदिवासियों को दिया जाए तो उनका क्या होगा? तो उसका जवाब बहुत सारे थिंकर्स ने लैटिन अमेरिका में, खास करके बोलिविया एंड सम इन अफ्रीका दिया है जवाब इसका, हमारे यहाँ भी, that if we give this one size fits all kind of education, if we impose on them, it will only destroy and pauperize, उनको भिखारी बनाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। और आज देख रहे हैं हम, look at the not the toppers, the bottomers of any result, कोई BA, BCom, BSc, bottomers, और उसका social classification आप देखिए। Is it and it is blatantly wrong to say कि उनका IQ कम है। मैंने देखा था ये NCERT की 90 dissertations I studied, NCERT में बनी dissertations 90, वो सब ये प्रूव करना चाहती थी कि IQ ही आदिवासी का कम होता है, which is complete nonsense. I mean, I came to the conclusion that ये रिसर्च करने वालों का IQ absent था। I mean, this is it's very painful to me. I therefore want to say this कि हम बार बार कहते आए और आप में से बहुत सारे साथी कहते आए कि आदिवासी को रिजर्वेशन देने से उनका एजुकेशन सुधरेगा, उनका एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से एजुकेशन, that is wrong approach. It is one size fits all approach. चॉक और बोर्ड भेजने से सुधरेगा नहीं. Therefore we have been saying, all of you have been saying, or many of you have been saying कि आदिवासी का नॉलेज अगर एजुकेशन में सिचुएट होता है, what the Adivasi knows, and I am using the term the Adivasi with hesitation क्योंकि there are so many different types of Adivasi communities,
बट आदिवासी का नॉलेज मेन स्ट्रीम में सिचुएट होता है और मेन स्ट्रीम सेंसिबिलिटी कुछ बदलती है, इकोलॉजी के बारे में, सोशल इक्वालिटी के बारे में, जेंडर के बारे में, तो देश का एजुकेशन सुधरेगा. Rajaram Mohan Rai had agitated for bringing Western education to India, English education as against Sanskrit and Persian. इस समय तो समय है to agitate for bringing tribal knowledge into mainstream. However, ये सुनने में, कहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनने में आपको अच्छा लगता है, पर जैसे बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा डिफिकल्टी, बहुत बड़ा चैलेंज सामने है. वो ये है कि पागल जैसे लोग इंडिजिनस नॉलेज के नाम से ये वैंडलाइज कर रहे हैं और डिवास्टेट कर रहे हैं. उसी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जिन्होंने साइंस बनाया पुराने समय में, दे अंडरस्टूड कि वो साइंस है, and therefore what Adivasi's knowledge of plant life was kept as different. आज जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से हम घेरे हुए हैं चारों तरफ से, उसमें इंडिजिनस नॉलेज ये टर्म नेशनल प्राइड बढ़ाने के लिए कि एक स्टीरॉयड जैसी दवा है. स्टीरॉयड होता है ना जिसमें एनर्जी नहीं है. I have only 2 minutes left and I'll finish in maybe 2 or 3 minutes. स्टीरॉयड ये दवा होती है कि जिसके एक घोड़ा होता है रेस का, उसमें एनर्जी नहीं, लेकिन उसको दवाई चढ़ा देती जो रेस जीतता है और बाद में मर जाता है. ये इंडिजिनस नॉलेज is being injected in the social discourse to increase national pride, to boost national pride, which in turn assists a totalitarian state, an autocratic regime. इसलिए ये जो इंडिजिनस नॉलेज क्या है, उसमें आदिवासी का नॉलेज की जगह क्या है, उसका कितना इस्तेमाल करना, कितना नहीं करना, इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा. और ये एक आदमी का काम नहीं, कलेक्टिवली करना पड़ेगा. ये पूरे 10 लेक्चर्स में माइनस माइन 9 लेक्चर में आपको इसके बारे में चर्चा मिलेगी कि एग्जैक्टली इंडिजिनस नॉलेज क्या है, उसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कितना नहीं. क्या सभी आदिवासी नॉलेज इंडिजिनस नॉलेज है? क्या सभी आदिवासी नॉलेज या इंडिजिनस नॉलेज दूसरी नॉलेज सिस्टम के साथ सिंक या सिंक्रोनाइज, सिंक इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज होगा क्या? अगर वो सिंक्रोनाइजेशन होता है तो उसके कोई दुष्परिणाम, कोई एनी इल इफेक्ट्स ऑन द कम्युनिटी विच हैज प्रोड्यूस्ड एंड प्रिजर्व्ड दिस नॉलेज, उनके ऊपर होके क्या? Will that kind of synchronization at all keep the political and the economic the progressive elements among आदिवासी? और अगर ये सब के बारे में शंका हो हमारे दिमाग में, and we don't allow any kind of dialogue between tribal knowledge and non-tribal knowledge, will the tribe, is that a choice between perishing altogether or accepting lesser evil, or is there a real chance? कि रियल चांस इसलिए मैं कह रहा हूं, पेरिश होना या तो बहुत ही पॉपुलराइज स्टेट में सर्वाइव करना, ये तो इंडिया के रूरल लैंडस्केप का हुआ ही है. पिछले 60, 70, 80 साल में आदिवासी की बारी आ गई है. बट आई एम सेइंग देयर इज आल्सो ए कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि द वर्ल्ड हैज स्टार्ट रियलाइज दैट इट इज फेसिंग इकोलॉजिकल इमरजेंसी, दैट होलोसीन इज ओवर एंड एंथ्रोपोसीन हैज ऑलरेडी सेट इन, कि ये पृथ्वी पेरिश होने के, इसका लाइफ पेरिश होने के बहुत नजदीक हम आ गए हैं. ऐसे स्थिति में एक सोलेस है, एक हमारे पास संजीवनी है कि आदिवासी कैसे जीता आया पिछले 10-12 हजार साल में सिंस सोलोसीन, उससे कुछ सीखे. सो देयर आर मेनी कैंपेन्स पॉसिबल. कैंपेन टू रिवाइज द मेन स्ट्रीम एजुकेशन,
improve it, campaign to bring Adivasi knowledge to challenge, to help solve the ecological crisis, campaign to protect the Adivasis in their shell, campaign to sanitize and bring sanity in the bridge between the Adivasi and the non-Adivasi communities. ये जात जात के campaigns, जात जात के challenges हमारे सामने हैं. I hope that in the remaining 9 lectures, some of the issues will get discussed, and collectively we might be able to form, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, एक phenomenological community. हमारा मेरा चित्त और आपका चित्त engage हो इस एक epistemic compact हम बना सके, और जिसे बहुत सिंपल शब्दों में हम फिलोसॉफी कह सकते हैं, एक आइडियोलॉजी कह सकते बनाए कि आदिवासी का शिक्षा ये आइसोलेशन में देखने का सवाल नहीं है, लेकिन आदिवासी की शिक्षा और आदिवासी को शिक्षा ये दोनों जरूरी है, ये भी बात सही है. तो हाउ टू गो अबाउट इट, इसके लिए कौन सा कॉम्पैक्ट बनाया जाए और किस तरह की मूवमेंट हम खड़ी करें, ये collectively if we can do through the medium of these lectures, I am sure the objective with which Professor Sundar Swarupai thought of setting up this course will be successful. Thank you so much indeed.